and a very good afternoon, everyone. I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English, where we are going to continue with our series of current affairs. So in this particular class, guys, you are going to have a quick relationship. You're going to understand a quick relationship between what current affairs and what static GK questions are based on. So this class is basically to help you all discover what all facts are associated, what all static GK is associated with your current affairs or the current portions questions that we are going to do now. Right? So how many of you are aware about what the current affairs associated with yesterday? Yes. And is there any doubt from the previous class? Then you can ask me now. Yeah. Sir, I cannot see the comment section. Sir, मुझे comments नहीं दिख रहे हैं. Okay, yeah. So how many of you are aware about what will be the topics for today and what were the topics that we discussed yesterday, and you have any issues with that? You can just let me know through the comment section. You can just type your comment down or type your query down, and I will be taking that and considering that as a topic for today. Yeah. So any doubts, guys? Yeah, just a second. Yes, guys. So associating with all the current affairs, we all are aware that we will be bifurcating them into three parts: Rajasthan current affairs, the India current affairs, and the world current affairs. And in this particular class, I'm taking up the Rajasthan current affairs also, which is important for your examination perspective, letting you all know that what will be the points of consideration while you're studying Rajasthan. राजस्थान की जीके एसोसिएटेड बुक्स तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन वो करंट कहाँ से पढ़ना है ये बताने के लिए ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू विद दोस क्लासेस नाउ एंड अंडरस्टैंड हाउ ऑल दीज क्लासेस आर इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, great. चलिए. Also, guys, please share this session with your friends also on the YouTube, on the platform that you are connected to, the YouTube, the WhatsApp statuses, or anything associating with the any other platform that you are associated with. Okay. Good morning, Manish ji. Good morning, a very good morning. चलिए, ठीक है. Okay, Sachin, good morning, a very good morning. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को. The first news headline is associated with one of the great and important topics, right? Good morning, Kirti. Good morning, Kirti. You were in the application class, I guess, right? Yeah. 30th India-Indonesia Coordinated Patrol. This is not petrol. We are not talking about a fuel over here. What we are talking about, this is an investigation which we are talking about. Patrolling karna, investigate karna to check upon what all actions are right and what all actions are correct, right? Sonu, a very good morning, good afternoon. Which was conducted in the Andaman Sea. So this is important for you to note down that the place where the investigation is being conducted is important for everyone and can be asked in the examinations too, right? तो अभी एक क्विक सा डिस्कशन करते हैं. एक तो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछने वाली हूँ आप लोगों से and I want you all to answer them in the comment section, right? Okay. So firstly, we are talking about India and Indonesia coordinated patrolling conducted in the Andaman Sea. Now, can you raise an issue which has been the most important and prominent issue with respect to the sea? Understand the question again. आपने sea के बारे में सुना होगा, आपने समुद्र के बारे में सुना होगा. What are the issues, what are the problems that arise in the sea that we need to figure out? What are the problems that are associated with the sea? Yes, can I know in the comment section? Manishi, Kirti, Sonu, क्या क्या दिक्कतें आती है सी के अंदर? Good morning, कौशल्या जी. Good morning, Peshal. Peshal, it's an humble request to you. Please share this session with your friends, Surya, Harshita, and anyone else, so that they can also join in. Share it on the Telegram channels too. Yes. Good afternoon, a very good afternoon. मैं पूछ रही हूँ ऐसी क्या दिक्कत होती है सॉइल आपकी सी से एसोसिएटेड जो हमें पता होनी चाहिए और उसी को काउंटर करने के लिए ये पेट्रोलिंग वगैरह की जाती है. तो सबसे बड़ा और मेजर इशू देखो जो करंट का चल रहा है, दैट्स व्हाट sea debris are not an issue, patient. I won't consider sea debris as a major issue. Instead, sea oil spilling, right?
Just wanted to ask that for RAS point of view, we are going to discuss any Rajasthan based newspaper like Dainik Jagran, Ayat. Just let me tell you one thing, okay? Just guys, wait for a second before we go to the C topic. Let me just tell you what all current affairs is, right? Ayat, this is the very nice question that you are saying and asking that, ma'am, can we refer to Dainik Jagran? If you ask me, I would tell you, refer to any one Hindi newspaper, be it Dainik Bhaskar, be it Dainik Jagran, be it Rajasthan Patrika, be it any other newspaper that you refer. Any one newspaper. I won't specify the newspapers because what news we require is not available in the newspapers. But from the international perspective, from the Indian point of view perspective, and from the Rajasthan's local perspective, we need to refer to any of the Indian newspaper, Rajasthan newspaper. So refer to any of the Hindi newspaper, be it Dainik Jagran, Dainik Bhaskar, or Dainik Rajasthan Patrika, or any other newspaper, right? But refer to this site. This is DIPR Rajasthan. ठीक है, जन सूचना पोर्टल या जन सूचना इन संपर्क पोर्टल जिसकी हम बात करते हैं, दिस इज दैट पोर्टल जहां पे आपके जितने भी प्रेस रिलीजेस हैं वो सब आ जाते हैं. जितने भी आपके प्रेस रिलीजेस हैं फ्रॉम राजस्थान स्टेट पर्सपेक्टिव, ये सारे आपके यहां आते हैं. राजस्थान स्टेट पर्सपेक्टिव, राइट? जैसा कि आप इंडिया लेवल पर पीआईबी फॉलो करते हो, वैसा ही मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप डीआईपीआर को फॉलो करें, है ना? नाउ व्हाट हैपेंस विद डीआईपीआर, you will be getting to know that yes, so and so minister said so and so about so and so scheme, so and so minister allotted this scheme, so and so governor visited this particular place. So you will have idea of every news headline associated with Rajasthan. चीफ मिनिस्टर ने अगर यहां से पेन उठा के इस टेबल पे रखा है, वो भी डीआईपीआर पे आता है. इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आती है, मतलब इतनी जो है वर्थलेस न्यूज़ भी आती है. और अगर हम बात करें किसी स्कीम से एसोसिएटेड न्यूज़, तो वो भी आती है. कोई बुक लॉन्च हुआ है, वो न्यूज़ भी इस पे आती है, राइट? मैम, यू विल डिस्कस एनी ऑफ देम राजस्थान पेपर और दिस पोर्टल बेस्ड न्यूज़. आई विल डिस्कस बोथ. आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी न्यूज़ एसोसिएटेड विद द राजस्थान, राइट? Ayat, some of the news headlines in this class are associated with the DIPR, some are associated with the PIB, some are associated with the current affairs which are not available on the both the portals, but they are important, like any action was taken against something, or which I get the flashbacks and flashes in the mobile phones associated with the Hindu and the Indian Express or the Dainik Bhaskar. I have these three applications on my mobile phone, so I refer to these three only, right? And sometimes when I look onto the Rajasthan Patrika and is there any important news headline, so I refer to the cutting of that particular, that in particular, right? हाँ जी, हाँ भरत, आज थोड़ा सा कुछ काम आ गया था इसलिए लेट हो गया आज. ठीक है, ठीक है. Any other point, Ayat, that you want me to clear up? Any other point? What do you want? Would you want that those newspaper cuttings and then the discussion on them? You want that? We can do that too. If you want anything associated like that, अगर आपको कोई ऐसा न्यूज़पेपर चाहिए जिसकी कटिंग आपको डिस्कस करनी है, तो हम वो वाला पैटर्न भी अपना सकते हैं. ठीक है. नितिन, गुड आफ्टरनून. क्या रिपीट करना है? प्रियंका, गुड आफ्टरनून. चलो, सोर्सेस क्लियर हो गए हैं. अभी एक चीज जो मैं बोल रही थी, सी एसोसिएटेड, समुद्र एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या है? थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. भरत जी बताइए, जवाब दीजिए. सी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या है? अभी आपने देखा पेट्रोलिंग हुई इंडिया और इंडोनेशिया की अंडमान सी के अंदर. 38th इंडो-इंडोनेशिया पेट्रोलिंग थी, है ना, कंबाइन. But here I would want you all to tell me what are the problems that are associated with sea. One learner, Peshal, has referred, ma'am, sea debris. Sea debris, समुद्र में जो पत्थर होते हैं, they are an issue. Absolutely they are an issue. What else? But ये कोई बहुत मेजर इशू नहीं है. हम इसको कह सकते हैं कि ये इशू है, लेकिन माइनर इशू की कैटेगरी में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, है ना? माइनर इशू की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं. अनटिल अनलेस ये कोई ट्रैवल बैरियर या कम्युनिकेशन बैरियर नहीं बनता है पेशल, तब तक ये कोई मेजर बैरियर नहीं होगा. अब प्रॉब्लम देखो, रशिया में हुआ था काफी साल पहले, बिल्कुल हुआ था काफी साल पहले. चलो नेक्स्ट, व्हाट इज एन इशू जो अभी ट्रेंडिंग में है और मैं आपको काफी बार बता भी चुकी हूं? तेल रिसाव. क्या बात है, एब्सोल्युटली ट्रू. Sea oil spilling.
sea oil spilling. Absolutely true, Peshal. One thing that Bharat has mentioned is associated with the plastic pollution of the microparticles. तो इसको मैं plastic pollution लिख लेती हूँ भरत. Plastic pollution. Very nice. So these are some of the problems which are associated with these seas, right? जैसा कि हम कहते हैं लैंड ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स आपकी अलग अलग होती है, वैसे सी पे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ये है. सो नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग ईच एंड एवरी एक्शन टू कीप दी सी वेरी क्लीन. Why? Because of the preservation of the natural life that is present in them, because of the security purposes, smuggling purposes. sea से associated एक जो major problem है वो smuggling भी तो है, illegal activity है, और अगर हम उसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो वो भी हो जाती है. ठीक है, तो इन सब का हमें ध्यान रखना है. रशिया said it will take a decade to clean the river in which the oil was spilled. Absolutely true Bharat, absolutely true. तिरुपति बालाजी मंदिर में डोनेट किए बाल काम आते हैं. फिर पेरू ने अभी आपातकाल भी लगाया था इसके कारण. एब्सोल्युटली, पेरू ने फॉर द ऑयल स्पिलिंग देयर वाज एन इमरजेंसी सर्विस टू. या एब्सोल्युटली ट्रू. नेहा सरगिया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. एब्सोल्युटली ट्रू, करेक्ट. स्मगलिंग. बट एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है? लैंड से भी ज्यादा. ये आपने अभी RAS का क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा आपके बायोडाइवर्सिटी एसोसिएटेड लाइफलाइंस और स्पीशीज कहाँ प्रेजेंट है? सो इट इज प्रेजेंट इन द वाटर. Blue flag for the cleanest site. Absolutely, Ayat. So they will be providing a blue flag for the cleanest surrounding nearby. Absolutely. डूंगर जी, गुड आफ्टरनून. क्या बात है, बहुत सारी चीजें पता है बच्चे को, तो बहुत सारी चीजें पता है. बिल्कुल. स्मगलिंग ऑफ सी एनिमल्स ऑल्सो बाय चाइना. सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो आपका लाइफ, इसमें हमने बात की थी ना कि स्पीशीज सबसे ज्यादा किस स्ट्रेटा में होती है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सी के अंदर होती है. स्पीशीज, लाइफ, बायोडाइवर्सिटी. अब अगर हमें उसे प्रोटेक्ट करना है तो कोई ना कोई मेजर एक्शन हमें लेना पड़ेगा. ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई मेजर एक्शन हमें लेना पड़ेगा. एंड वन ऑफ द मेजर एक्शन इज टू कंजर्व देम थ्रू दी पेट्रोलिंग. पेट्रोलिंग करो, इश्यूज को डिस्कवर करो और फिर उनका सोल्यूशन निकालो. सो इज दिस क्लियर गाइस? ब्लू बीचेस, एब्सोल्युटली ट्रू. ब्लू फ्लैग फॉर द गुड बीचेस. एब्सोल्युटली. कोरल्स का डैमेज उसी में आ जाएगा. आयत, आपकी डाइवर्सिटी का ही पार्ट है कोरल्स भी. कोरल रीफ्स भी किसका पार्ट है? डाइवर्सिटी का पार्ट है, राइट? ओके, next let's have a look at the description which is associated with this news headline, which will be helping you all in understanding why this news was important, right? So this is the 30th India-Indonesia coordinated patrol that was nicknamed as Indo-Corpat. Right, and this Corpat was very important between the Indian Navy units, that is the INUs, of the Andaman and Nicobar Command, that is the ANC, and later on along with the Indonesian Navy is being conducted from 13th of June till 24th of June. और ये कहाँ conduct होगा? आपके Andaman Sea and the Straits of Malacca. So it will be conducted basically in the Andaman and Nicobar Islands, and these two will be taken care of, the Andaman Sea and the Straits of Malacca. One thing guys, प्लीज रिमेंबर, अंडमान एंड निकोबार के ऊपर क्वेश्चन आता है. ग्रेटर अंडमान क्या है, ग्रेटर निकोबार कौन सा है, आपका मिडिल अंडमान कौन सा है, आपका लोअर कौन सा है, आपका अपर कौन सा है, आपका पोर्ट ब्लेयर कहाँ लोकेटेड है, आपका मलक्का स्ट्रेट कहाँ लोकेटेड है, इनके सब के ऊपर क्वेश्चन आपका आता है. सैडल पीक कहाँ लोकेटेड है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कवर अप द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार फॉर टुडे. आज का होमवर्क यही है कि जो आपका अंडमान एंड निकोबार का मैप है उस मैप को आप अच्छे से कवर कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू डूंगर जी, थैंक यू. Now this is the 30th Corpat, and after the first pandemic, and is the first post-pandemic coordinated patrol between the two countries. Like after the pandemic, with the pandemic that we are talking about here is COVID. This is the first time that we are conducting any of the patrolling like this, right? जी, अग्निपथ क्या है आपको नहीं पता? हाँ, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आ जाता है भारत. ये तो इंडिया का ही आ जाता है. जब इंडिया के मैप में नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आ जाता है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आपका कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है सीक्वेंशियल मैनर में. तो एक बार जब तक उस मैप को 10 बार नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ में आएगा. ठीक है, आयत, वेरी नाइस. दिस वाज अ मेजर जेल. यस, दिस इंक्लूड्स अ विजिट बाय द इंडोनेशियन नेवी यूनिट्स to the ANC at the Port Blair, that is the Andaman and Nicobar
command we are talking about over here, right? And later on we can see that this is the sea phase of the Andaman, which will be taken again ahead by the Indonesian units to the Sabang of Indonesia around the 23rd and 24th of June, which will be conducting a patrolling over there. So this is conducted between both the areas, associating with the both regions cooperational. तो यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन भी इन दोनों की बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. नाउ व्हेन आयत यू हैव मेंशन्ड मेजर जेल ऑफ पोर्ट ब्लेयर, लेट मी रेज अ क्वेश्चन एसोसिएटेड विद जेल. क्योंकि आयत ने जेल का नाम लिया है, तो रिसेंटली जेल टूरिज्म वाज सीन इन न्यूज. दिस इज एसोसिएटेड विद विच जेल ऑफ इंडिया? Yes, guys, jail tourism was seen in news. This is associated with which of the jail of India? New names of islands of Andaman and Nicobar, absolutely. We can refer to the new names and the old names too. Yes. Here we are talking about which jail of India is associated with the jail tourism. Absolutely true, Bharat. Bharat ji का आंसर बिल्कुल सही आया है. This is the Yerwada jail. It is located in the Pune, right? Yerwada jail we are talking about. भारत सरकार ने और महाराष्ट्र की स्टेट और गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपके जेल का टूरिज्म बूस्ट करने के लिए, ताकि आपके लोगों को ये पता रहे कि जेल में किस तरह का आपका एनवायरनमेंट रहता है, वो क्राइम्स को रिड्यूस करे. इन दोनों ने कंबाइंड एफर्ट्स के साथ में जेल टूरिज्म शुरू किया है. जेल टूरिज्म शुरू किया है ताकि बाहर के टूरिस्ट को भी पता रहे आपके कि आपका किस तरह का एनवायरनमेंट आपके जेल्स में देखने को मिला है. सो इट इज एसोसिएटेड विद द यरवाड़ा और यरवादा, बोथ आर करेक्ट, राइट? इज दिस क्लियर? यस. Andaman and Nicobar में SC Bose and Swaraj Islands, absolutely true, because Andaman Nicobar was freed by the SC Bose during the World War II. Absolutely true, भरत. देखो भरत, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं किसी भी जगह का, तो हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि हमारे अपकमिंग दिमाग में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, है ना? हमारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं. जैसे भी अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा जेल से एसोसिएटेड, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लियर आ जाएगा कि मैम अगली बार हमसे ये भी पूछ सकती है कि भैया जेल टूरिज्म तो ठीक है, आपका स्पेसिफिकली टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है? Which state's tagline is associated with this tourism? With so and so tourism, what was the year and the government's perspective and sayings on the tourism? क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए? क्या राजस्थान स्पेसिफिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कोई एक्शन लिए जा रहे हैं? तो ये सब आप टूरिज्म में कवर कर लोगे, राइट? तो बेसिकली जब अपन पढ़ते रहते हैं तो अपने माइंड में क्लियर होती रहती है चीजें कि और क्या करेक्ट करना है और किस तरह से हम आगे कन्विंस करके टॉपिक को कवर कर सकते हैं. Next and the last point that is associated with the economic zones. This is a part of exclusive economic zones which we are talking about, which are not actually paying any attention to the economic activities but are necessary for the transportation, right, of goods and services. So this is that you need to keep in mind. This headquarters is associated with the Andaman and Nicobar only, right? Is this clear, guys? इतना clear हुआ? कोई doubt है किसी को इसने में? चलो. So now we have the two navies that have been carrying out the Corpat, which is along their international maritime boundary line since 2002. तो आपको इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए कि कितने आपके माइल्स से दूर है, कितने आपके माइल्स के पास है, कहाँ यहाँ से नियरेस्ट स्पॉट आपका कौन सा आता है, नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस कितना होता है, ये सब आपको डिस्टेंस में पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज दिस हैज हेल्प बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड द इंटरऑपरेबिलिटी. ये हमेशा मैं बोलती हूँ, दिस इज अ न्यू वर्ड, दैट इज द इंटरऑपरेबिलिटी. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द टू नेवीज. सो वन विल बी लर्निंग थिंग्स फ्रॉम द अदर. सपोज आज मुझे इससे लिखना आता है, अगर आप लोगों को इसके ऊपर उंगली से पेन चलाना आता है, मतलब इस तरह से, तो आप मेरे को बोलोगे कि मैम ये आप क्या कर रहे हो, हम तो और अच्छे से लिखना बता सकते हैं. तो मैं आपको पेन बता सकती हूँ चलाना और यहाँ से हाथ से भी चलाना सिखा सकती हूँ. तो दोनों ही चीजें दोनों को आ जाती हैं, राइट? गुड आफ्टरनून सचिन, गुड आफ्टरनून सूर्या. सूर्या, दैट देयर वाज अ कंफ्यूजन, नाउ इट हैज बीन शेड्यूल्ड. आज की दिक्कत थी, कल से कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है? चलो, तो एक चीज हमें और ध्यान रखना है दैट विद दिस रिलेशनशिप
with this particular partnership or with this particular patrolling that we are doing with the Andaman and the Indonesia, India and the Indonesia, we are building strong friendship ties with Indonesia too. इंडोनेशिया में एक तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, the only business in Indonesia is associated with the tourism, and that too many or maximum of the population coming there for the tourism services, to avail the tourism services associated with the Indians too, right? And also Indonesia is trusting India that one day when he will be in need, India will be helping Indonesia out, right? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? पेट्रोलिंग एसोसिएटेड न्यूज, कॉटपैट 38 न्यूज, इंडोनेशिया, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन देखिए. द कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च्ड द फ्रूट्स सॉफ्टवेयर फॉर फार्मर्स स्कीम. Now all these schemes associated with the farmers will now be covering up under the fruits scheme. This is also very important. Fruits scheme is also very important. Now why is this important, guys? Let's understand this, that the government of Karnataka is launching the farmer registration unified beneficiary information system, that is the fruits, right? आगे बढ़ते हैं. This is a software for Aadhaar based single window clearance system and registration for these schemes. That अगर आपकी 4 स्कीम्स है, चलो एक है आपकी मिनी किट्स वाली, सीड मिनी किट्स वाली, एक है आपकी जो है फार्म इंश्योरेंस वाली, एक आपके हेल्थ इंश्योरेंस वाली, एक चौथी अपन कह सकते हैं कि किसी चीज की सब्सिडाइज, वेयर हाउस सब्सिडाइज की स्कीम है, ठीक है? 4 स्कीम्स है. इन चारों स्कीम्स को आपको अवेल भी करना है और चारों स्कीम्स का बेनिफिट भी आपको चाहिए, ठीक है? चारों स्कीम्स की जानकारी भी आपको चाहिए. तो आपको क्या करना है? You don't have to do anything until unless you have to download this fruit software, which will be later helping you all in the like understanding how seeds function, और आपकी उसकी soil health card के बारे में आपको बताएंगे. तो basically आपका technological advancement होना बहुत जरूरी है. Fruit software will facilitate single registration using Aadhaar card on the Karnataka's Bhumi digitized land record system for the authenticated ownership. इससे क्या होगा? एक चीज, जो fraudsters हैं वो भी आपके खत्म होंगे, ठीक है? फ्रॉडस्टर्स भी आपके खत्म होंगे. चलो तो फिर एक न्यूज हेडलाइन और बता दो. टू काउंटर फ्रॉडस्टर्स, which state government has taken initiative to counter this particular fraudsters associated with the land? लैंड के एसोसिएशन में ना, लैंड के एसोसिएशन, जमीन के एसोसिएशन में अगर हम बात करें आपके फ्रॉडस्टर्स को काउंटर करने की, तो उनको फ्रॉडस्टर्स को काउंटर करने के लिए आपके कौन से स्टेट ने इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स लिए हैं? फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय, 2 अंतरराष्ट्रीय, 3 अंतरराष्ट्रीय, 4 अंतरराष्ट्रीय युद्ध. शुद्ध कौन सा है? अच्छा, शुद्ध वाले क्वेश्चन आप यहाँ ना पूछे. इंडोनेशिया से पेपर स्ट्रॉ का आयात किया जाएगा क्योंकि 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन करने के कारण. एब्सोल्युटली ट्रू. एज फ्रॉम 1 जुलाई 2022 द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, जो हम यूज एंड थ्रो चीजें यूज करते हैं, उनका यूज, उनका कंजम्पशन आपका बैन हो जाएगा. तो अभी आप इस पे ध्यान दीजिए. फ्रॉडस्टर्स को काउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश ने, we are talking about the UP state government has taken the initiative. Now for what it has taken the initiative? To counter what? The fraudsters, the land fraudsters. Land fraudsters की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. जमीन से एसोसिएटेड जितने भी आपके फ्रॉड्स हो रहे हैं उन सबको ये टारगेट करेगा, राइट? हाँ जी, हाँ न्यूज में है भरत. वो भी मैम दैनिक भास्कर में आप होंगे. मुकुंद जी ये तो मेरे को बताना पड़ेगा आपको, है ना? अभी तो टाइम है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब देखो करियर एग्जीबिशन टाइप्स चीजें हैं, करियर फेयर है, एजुकेशन फेयर है, तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को आना चाहिए. और भी कुछ नहीं, विजन ही खुलता है ना? एक चीज हमेशा याद रखना, कहीं भी जाने से जब कोई भी आपको ये कहे ना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उनको बोलना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ रहा तो टाइम वेस्ट होगा, उल्टा मैं क्या कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है. सेम वे जाना जरूर आप, ठीक है? चल नेक्स्ट देखते हैं. अगर हम बात करें
To ensure that the farmers get easy access to the benefits whichever the government is providing for the various government schemes, and the Karnataka government has launched a software for Aadhaar based single window system. This is the association with the registration of these schemes. Now the registration of these schemes is important. Why? Because then only you can claim the scheme or claim the particular region to be yours, right? नहीं राहुल, रोज क्लास वाइज 10 बजे होगी सुबह, ठीक है? दैनिक भास्कर का फेयर हो रहा है ना, एजुकेशन फेयर स्पेशल जयपुर में, शायद 17 से 19 हो रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स, पर ये नोटिफिकेशंस वगैरह आपको यूट्यूब से पता चल जाएंगे. स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मैंने आपको कहा था लास्ट, अगर हम बात करें जनरेशन की, सो दे जस्ट हैड दिस वन थिंग टू डू, दैट इज द एग्रीकल्चर. अब हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ में हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, रेवेन्यू, फूड, सिविल सप्लाईज एंड फिशरीज डिपार्टमेंट सबके ऊपर ओवरऑल फोकस करना पड़ता है. And when you focus overall on the important topics like these, then they become very very important topic in your examination, right? हाँ, अभी आ गया समझ में पेशेंट. चलो, भरत का आंसर आ गया है कि मैम जयपुर में होगा. मनीष जी कह रहे हैं कि मैम गुड मॉर्निंग, सही है. कहाँ जाना चाहिए? वहां जाना चाहिए जहाँ पे सही गाइडेंस मिले, ठीक है, ट्रेड फेयर में. चलो, next when we talk about the India's rank in the global hunger index that is associated with the 2021, it is what? Global index की बात यहाँ पे हो रही है, hunger index की बात यहाँ पे हो रही है. क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? हेलो जी पुतन साहब, स्वागत है आपका क्लास में. चलो बताओ क्या आंसर होना चाहिए. ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही? ऊपर ही लिख रखा है 101 मैंने. लेकिन किसी को नहीं दिख रहा. हाँ, ये किसी को नहीं दिख रहा. इंडिया रैंक्स 101 इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021. इतने स्मार्ट कहां से आए आप लोग? इतनी स्मार्टनेस कहां से लाए? चलो समझने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है. किस किस चीजों का रोल है वो भी देखते हैं. सबसे पहले इंडिया की रैंक पूछी है. सो द इंडियाज रैंक हैज ड्रॉप्ड टू 101 पोजीशन अमंग द 116 कंट्रीज इन द GHI 2021, राइट? बहुत नहीं, बहुत पीछे. 116 में से 101वें नंबर पर है, बहुत पीछे. The 2020 GHI score is of India's recorded at 27.5 out of 50, which comes under the serious category that we need to look upon the hunger of the people and we need to cure them by providing them good nutrition, good food and etc. Like be it, I would not say that this is एक देखो गुड डीड होती है, जैसे कहते हैं ना प्यासे को पानी पिला देना चाहिए, वैसे अगर भूखे को रोटी खिला दी तो वो भी बहुत पुण्य का काम होता है, राइट? तो यहाँ पे भी रेफरेंसेस वही हैं, ठीक है, जो अगर हम देखें कि एक्शंस वो लो जो आपके लॉन्ग रन में अच्छे हों. यहाँ हंगर इंडेक्स के ऊपर हम कोई भी एक्शंस नहीं लेते हैं. इंस्टेड आप बाकियों की तो क्या बात करेंगे, इवन इफ यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल, दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग टाइम टू फंक्शन इन अ प्रॉपर मैनर, राइट? चलो, so in 2020 India was placed on the 94th position out of the 107 countries, and now India has positioned on 2021 on the 101, and out of 27.5, 50 was the original score, in which Nepal was at 76, Bangladesh at 76, Myanmar at 71, Pakistan at 92, and also they are alarming in nature. So hunger category but have fared the better feeding its citizens than India according to the reports. This is important for us to note down as it is countering what the government's choice as well, right? अच्छा जी, बिल्कुल जीरो हंगर प्रोग्राम भी है. चलो नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन देखो. There are some of the top countries in the index, which includes the China, the Kuwait and the Brazil, which shares the top rank, right? Later on, the GHI score out of these 18 nations is less than 5, which means this will be giving that these countries suffer very much from hunger and malnutrition.
right? Later on, we can see that the index is published jointly with the Wealth, Hunger, Life and the Concerned Worldwide. So these things are also very kept in mind whenever you talk about anything associated with the concerning issues and topics. Please do keep this in mind, that have a look at what they are serving and what their quality is. Chalo. Next news headline is also very important for us to note down, that the first centralized AC railway terminal in the Bengaluru comes operational, right? Whenever we talk about first train for associated issue, right? फर्स्ट ट्रेन फॉर एसोसिएटेड इशू जब भी हम बात करेंगे तो किससे एसोसिएशन आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट एयर कंडीशन टर्मिनेटेड इशू, तो वो किससे रेफरेंस आ जाएगा आपका, ऐसे रीजंस पे जहां पर भले अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी कंटेंट आपका ज्यादा हो बट पीसफुल जो है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे मैनेजमेंट हो पाए, वो हमें ध्यान रखना है. हंसराज जी वेरी गुड मॉर्निंग. अरे बिल्कुल आ गया, ब्राजील क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है ब्राजील का. So here we are talking about ultra luxurious railway terminal in Karnataka capital city. Bengaluru was made operational, and here we can refer to the Ernakulam Tri-Weekly Express has been changed and chugged through the station to mark this special occasion. Now this is very important. Along with this, the railway station officers and the air-conditioned SMB railway terminal is approximately at rupees 314 crore projects, and this is very important for us to note down these terminologies. It has the solar rooftop panels and rainwater harvesting mechanism. So with the reference to the renewable energy too also, this is very important, right? Renewable energy के progresses and perspective से भी important है, right? Putin should focus on Ukraine only. Putin जी वहीं focus कर रहे हैं, ठीक है, right? Chalo. Next is the railway terminal is at the cities, and the city side hotels and railway stations are considered to be very much in functioning. Very much in functioning. Right or not? Chalo, koi baat nahi. It was a joyous moment for the crew and passengers for being the first to use the city's third terminal, which is being situated in the Banswadi and the Baipannalli in the city. City of what? City of Bengaluru is referred over here, right? City आप देख सकते हैं आपका कौन सा रेफर किया गया है, right? The other two major terminals in the Bengaluru are the Bengaluru City Railway Station and the Yeshwantpur Railway Station, which is also very important. Now the next news that comes into mind is associated with the Agnipath. It is a transformative reform that the cabinet says Agnipath schemes is for the recruitment of the youth in the armed forces. People should not at least use the armed forces at the younger level, because now what will it create? What will it create? Violence, right? सिर्फ भरत के आंसर आ रहे हैं और कोई लर्नर आंसर देने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी आंसर देने में इंटरेस्टेड नहीं है. चलो, let it be. Union Cabinet approved an attractive recruitment scheme for the Indian youth. Now for what it is? To serve in the armed forces, right? Later on, the Agnipath allows patriotic and motivated youth to serve in the armed forces for a period of 4 years. And after that 4 years, you will be becoming an employee also, not your internship. आप एक तरह से क्या कह सकते हैं, आप इसको एक कनेक्टिविटी कह सकते हैं कि आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा. Later on अगर आगे बढ़े तो Agnipath scheme has been designed to enable the youth profile in the armed forces. And for the armed forces, this youth profile needs to be get improvised, and also all these subjects and the whenever we talk about something associated with the force and things, then I wish that the things get clear very easily. है ना? चलो. And as for the armed forces, it will enhance the youth profile of the armed forces and provide a fresh lease of Josh and Jasba. Whilst at the same time, the thing about being transformational shift towards the more tech-savvy armed forces is indeed the need of the hour.
अभी एक नॉर्मल सी चीज बताती हूँ, अगर गर्मियों में कोई 5 या 6 से ज्यादा जो है रिलेटिव्स अगर आपके घर आ जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल है। यस, ऑनेस्ट ओपिनियन मैम, कंप्लीटली सोलर एनर्जी साइंस चलने वाला रेलवे स्टेशन तो राजस्थान में ही है ना। सोलर एनर्जी डिपेंडेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, सोलर एनर्जी की डिपेंडेंसी के साथ साथ में इलेक्ट्रिक डिपेंडेंसी भी है, राइट? क्लियर हुआ? चलो, let's understand this now, that in it envisaged the age profile. Now that is also very high in number, and the dividends of our short military services is to the nation, and the society and the youth of the nation are immense, are all not included, right? This includes the inculcation of participants and the partisanship and the teamwork and association with the enhancement of other things. So this is very, very important for us to note down this in a very certain manner, right? Chali, let's move ahead, guys. Now we are talking about Agniveers. Agniveers will be getting a lot of benefits out of these particular positions. Later on, when we can see is the APEDA organizes international buyer-seller meet at Leh for boosting export of apricots and other agri products of the UTs and the Ladakh. तो एक चीज हमारे को वेरी वेरी क्लियर हो गई है कि आपके यहाँ मतलब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो whenever we talk about this particular in nature, no of the trash is required. Trash required नहीं है, right? नोटबंदी किसने लिखा है? नोटबंदी, इट्स लाइक नोटबंदी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन देखो। APEDA organizes international buyer-seller meet at Leh. Now this is for boosting of the apricots and other agriculture products of the United States of the United States आएगा क्या, या यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आएगा? बोलेंगे कि मैम ये यूएसएल भी कर दिया आपने, तो गजब ही पढ़ाते हो आप तो। अच्छा, मोदी जी का डिसीजन क्या है, क्या बात है, सही है सही है, गजब। चलो, एप्रिकॉट्स के बारे में सुना है सबने? एप्रिकॉट्स के बारे में सुना है? नहीं सुना? एप्रिकॉट्स थम्स अप देने से क्या होगा? हाँ, थम्स अप देने से क्या होगा? चलो समझते हैं फिर इस न्यूज हेडलाइन को, क्या कह रही है ये। This is in a move aimed at the realization of the Honorable Prime Minister in the vision of vocal for local, right? With an emphasis on the Atmanirbhar Bharat, agriculture and processed food products, and the Export Development Authority is in collaboration with the Union Territory of Ladakh today organized an international buyer-seller meet at the IBSM, which is very very important, guys. IBSM क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बताइए जरा, IBSM क्यों इंपॉर्टेंट है? Why is this IBSM important? International buyer seller meet, guys. International buyer seller meet is important as if this YouTube platform was not available. If I want to convey any topic of mine and you want to convey any problem of yours, how would we be connecting? Yes, no comments on that please, Nato ji. Okay. खुबानी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, करेक्ट। आड़ू कहते हैं, एप्रिकॉट है ना, and also it is known by the name of apricot. Sometimes someone uses the name peaches also, right? So more than 30 producers of Ladakh apricots and the other agro products. Now guys, the question can be formed out. Recently apricots as a fruit was seen in news, and to export that we need in huge quantities.
So which state is considered to be the leading producer of apricots? Then it is the state of the Union Territory of the Ladakh, right? Next point we have is the Jammu and Kashmir participated in the interaction of the importers and along with them exporters, providing platform to growers, entrepreneurs from UTs, etc. Now this is important. Why is this important? क्यों important है? बताइए जरा. Why is this important? It is associated with the agriculture development. Exactly, it is associated with the agriculture development. Also, it facilitated the B2B interaction, that is the business to business interactions. Leh Ladakh has evolved endowed with the conclusive climate conditions for the production of the large number of apricots and other agriculture products. So everything there is very nice in quality and everything. Next is the farmers and entrepreneurs of Union Territory of Ladakh and Jammu and Kashmir need exposure to the international trade opportunities. They will be having an idea of exports, but they are not very much aware about how exports will be helping them all in achieving good goals and great goals at a time, right? Exports को increase करने के लिए बिल्कुल सही भरत. Is that clear? चलो. So next news headline देखो. This particular board of the buying and selling, right? This will be an opportunity to the producers and the processors of the Union Territory of Ladakh and Jammu and Kashmir to show their products to promote the exporters as well as the wholesale and retail rate. So exporting rate अलग होती है, wholesale rate अलग होती है, retail rate अलग होती है. इन तीनों rates के ऊपर discussion करके हम conclusion निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका सबसे effective measure है. APEDA under its initiative to boost the exports, and APEDA is also very responsible. It is now trying to boost the anything that is being required and anything that needs to be done within a week as we are running like a short of time. और हम ये देख सकते हैं बेसिकली कि आपके जितने भी पोटेंशियल हैं आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से एसोसिएटेड उनको आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा. दिस विल बी अ प्लेटफॉर्म व्हिच विल क्रिएटेड फॉर द बायर्स टू गेट द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स ग्रुप एंड द प्रोसेसर्स. तो प्रोसेसर तो आपका यहाँ पे बना रहा है और उसको वहीं पे जाके हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं. तो दैट्स नॉट सॉर्ट ऑफ अ गुड थिंग दैट यू नीड टू डू, राइट? नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन देखते हैं. दिस इज एम्ड टू लिंक the producers and processors of the UTs of Ladakh and Jammu and Kashmir. Now one more thing, they are keep on coming up, right? This is nothing different in that, and I consider them to be a very important portion with respect to the exports and the mains answer writing perspective. The next comes that the cyber crimes. So cyber police stations have been set up and they will be set up. Approval for the creation of 480 posts was announced by the Chief Minister in the budget, and now we can consider that the position of the position of this particular association with the rigidity, the discipline is very, very important, right? Okay, moving ahead, इस news का description देखते हैं. This will be establishing these cyber police stations in all the districts of the state for the effective prevention of the cyber crimes and to provide the protection of the internal and the general public from the cyber threats. And this particular direction, the state government is working with full commitment. So all the Home Department has issued administrative and the financial support for the necessary human resources and equipments for these police stations. And this is the cyber police station already functioning in Jaipur, and remaining 32 revenue districts will be the government has approved for the creation of a 480 news posts as per the 15 news post per police station. And this is important. Also, this is important to set up cyber police stations in all the districts basically, but all में अंदर मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, all नहीं आएगा. There will be some districts which are associated with the expansion. Next comes the Mahatma Gandhi English medium schools which have been digitized. तो digitalization in schools का हो चुका है. Let's understand the news headline. From application to the admission process in the Mahatma Gandhi English medium school, it is being done completely online. And as a model, this process has been started in the Mahatma Gandhi English medium school located in the Mansarovar. Due to the online application process here, applicants have completed the application process from their homes by mobile and computer, without being present in the school premises in the scorching heat. Strong trends among people to enter the school. Now, one thing that I need for you all to know, guys, just for the first time, just tell me some of the great answers that are associated with this news headline of the medical sector and as well as the agriculture sector. So first thing in the education sector. तो education के ऊपर ही अगर question पूछना है तो एक question पूछ लेती हूँ. That recently one school
one IAS program was launched. Who was responsible for this particular program? One school, one IAS program. क्यों इंपॉर्टेंट था ये वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम? कोई बता सकता है? यस, वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट था? कोई बता सकता है? नहीं आता? चलो, so no worries, this was started by the Kerala governor, right? Also, one thing that you need to keep in mind, the list of all the ministers and their offices, right? So this is also important for you to note down. Next news headline is the government schools of Mansarovar is the first digital school in the state. The state of Kerala is doing constant efforts in the public sector schools too, as it is deploying some of these smart boards there too, right? Next is if they will come out of these schools in the administration, they were provided seats to the applicants through the lottery system. So this is important for us to be responsible and take care of the children in a very happening manner. Receive separate mobile application for school which has been launched, made for this school of Mansarovar, which has been available in the Vidyarthi Darpan. Students and parents using this mobile application since last session, so they are getting the access to what? They are getting the access to all the work that has been associated with these schools. So it is very, very important. Next news headlines, भैया ये बहुत है, important है. Good news from Bansi Paharpur. Mining work started in 2 mines. The first shipment of sandstone continues. So this is very important. They are targeting what? They are targeting that whenever we talk about something and it is about in the news, then the Bansi Paharpur region, which is the mining work started in the 20 mines, 2 mines for the first time shipment of the sandstone continues. So the continuation of the sandstone with respect to the changes is necessary, right? Next news headline when we talk about the commencement of mining work in 2 mines with Bansi Paharpur region. Bansi Paharpur region वही है जहां पे आपके राम मंदिर का पत्थर भी जा रहा है. राम मंदिर का पत्थर भी आपका यहीं जा रहा है. Sanctuary area is basically allowing in the diversion of the forest land, and in view of the demand of the Bansi Paharpur stone for the construction of the Ram temple, it has been sensitive for the state government to start legal mining in this area. So illegal minings are taking place, but legal mining first we need to get on the track. And if you are not associated with the track, then there will be problems. So अब बंसी पहाड़पुर रीजन का रेफरेंस आपको पता है राम टेम्पल से था, जो अपना अयोध्या वाला राम टेम्पल बन रहा है. Associating with that, now we will be targeting and taking care of them in a clean manner so that everything remains clean. Next देखते हैं आपका Election Commission of India, New Delhi issued notification for the presidential election. Guys, अब ये न्यूज में रहा है, आपको पता होना चाहिए. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपका क्या होता है, कौन नॉमिनेट करता है, कब होता है, कैसे होता है, क्या होता है, right? Every question that comes to your mind, you need to keep a check on it, right? Because we are talking about the huge Ram Mandir. Just not the languages associated with that, the emotions, the sentiments of people who have lost their families years back is given into account. So I hope guys ये session clear हुआ होगा आपको. ये news headline भी, the Election Commission of India has released the schedule for the presidential election by announcing the presidential election. तो election की बात यहाँ आ गई है. The notification for the presidential election will be issued on June 15 and the last date for filling particular of that is on the 30th of June. With the withdrawal of the nominations has been notified as a July 2nd, where the Chief Electoral Officer of Rajasthan, Shri Praveen Gupta, informed the team members so that now the presidential election will be taking place and it will be done on the scheduled date on 18th of July in the Rajasthan's Vidhana Sabha premises, and counting of votes will be done on 21st of July. So there have been references with the other points too. Now these references are very, very important as some of the other news and new things just schemes and cover. तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें इसको भी कवर करना है. चलो अब फटाफट से क्वेश्चनियर राउंड आपका ले लेते हैं. लेट्स टेक अ क्वेश्चनियर राउंड ऑफ टुडेज टॉपिक्स, राइट? सो देयर हैव बीन द एक्सपोर्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन
नाउ रीजन एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन, रीजन एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कौन सा रीजन है और इसका आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन है, बताइए। रीजन और आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सिर्फ सिलेक्टेड एमपी एंड एमएलए वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एब्सोल्युटली एवरीबडी शेयर्स। ओके, थैंक यू सो मच टीचिंग हब, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र जी गुड मॉर्निंग, क्या बात है धर्मेंद्र जी। ओके यस, ओके, केदार जी का पॉइंट है मैम, दिस स्टोन वाज आल्सो यूज्ड इन द रेड फोर्ट, sort of this stone was linked in the association of the red fort, right? Absolutely. So Surya has given the correct answer that the export of the red sandstone is done from the region of the Bansi Paharpur region of the Bharatpur, and to where? तो भरतपुर का रीजन है बंसी पहाड़पुर वाला, वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है कहां पर, राम मंदिर, राइट? Simbex is an exercise involving what? जी, Simbex is associated with what? बताइए जरा कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से। Simbex, Simbex किससे एसोसिएटेड है? Simbex, I'm talking about, this is an exercise which was like done recently. ये किससे एसोसिएटेड है बताइए जरा। हाँ जी, nobody with Simbex? Absolutely, Peshal, it is Singapore, India, maritime, bilateral exercise, करेक्ट। चलो और क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। सूर्य, डू नॉट पे अटेंशन टू देम, राइट? लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर हियर फॉर एंड नॉट पे अटेंशन टू व्हाट वाज रिक्वायर्ड ओवर देयर, राइट? ओके, सो रिसेंटली that has been a very popular question now. Okay, one more question. Wines were seen in news. Wine export from India was seen in news. Which state is producing the maximum wine? Yes. Which state is producing the maximum wine? Welcome to the class, Kajal. Any doubts? Leave Surya. Focus over here. I'll look after it. मैं करती हूँ, अभी आप इस पे ध्यान दो, छोड़ो. Exactly. Peshal giving the right answers back to back. It is the state of Maharashtra, belonging to the region specific to the Nasik, for the grape wineries. Grape wineries. Yes, absolutely true. What else was seen in news, guys? Recently, a missile, or I would say satellite, okay, no. China's mission to study moon. Name that. Name that. As like ASAP वाला आंसर चाहिए मुझे ये फटाफट से. What can be the correct answer for this question, particular question? Yes, guys. I would want the answer right now. China's mission name. हाँ जी, nobody? क्यों, क्या हो जाता है एकदम से? आंसर देते देते भूल जाते हो क्या?
Shanti 1. Absolutely true. Absolutely true. Patial. नमस्ते क्रेजी जी. वेद मैं देखती हूँ अभी. ठीक है. अब look at that. ठीक है. One more thing. One more question. Last question. Tiangong was the recent It was a research project of China, Surya. ठीक है? Sixth question होगा ना? Sorry, fifth. चलो. Fifth question. Hope mission associated with which country? Hope mission associated with which country? Yes, anyone? Hope mission associated with which country? Space station Tiangong. Yes. Hope mission is associated with which country? India. ठीक है. Hope mission India से है? Yes. The United Arab Emirates. And this is the mission on Mars. Quickly, last question. World Environment Day 2022 theme. Emirates Mars mission. Yes. भूल गए, कोई बात नहीं, रिविजन करते रहेंगे, है ना. Here we are talking about another question that is associated with the World Environment Day, which was being observed on the 5th of June recently on in the year 2022. What was the theme for it? 5 जून को ये मनाया गया. 5th June 2022. थीम बता दीजिए फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर. Only one Earth. Absolutely true. Only one Earth. Right. Correct. Okay, guys. So you have some homework for tomorrow. Andaman and Nicobar. Island questions. We will be discussing tomorrow. So at 10 a.m. you have the test of these questions. Okay? And this is for sure. For sure, at 10 a.m. tomorrow, we will be having along with the right after this current affairs class gets over. In this particular class only, अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे आपके Andaman and Nicobar Islands से associated questions के, which will be covering up the static GK and the current affairs. So see you all tomorrow, and thank you so much for joining in with this session. I hope you guys have enjoyed the session and learned a lot of things. So keep learning, guys. Keep sharing this session with your friends as well, and join me tomorrow 10 a.m. live on Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English. Till the time, bye bye. Take care. Thank you so much. Bye bye.